यह नया कानून आपके लिए पीएफ, पेंशन, बीमा और ग्रेच्युटी जैसी अहम सुविधाएं सुनिश्चित करता है। साथ ही महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव का लाभ भी देता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लॉ की, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये पार्लियामेंट ने बनाया है ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी मिले, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो या गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो। एक ही कोड में 9 पुराने लेबर लॉज मर्ज कर दिए गए हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं ये कोड क्या है और कहां लगता है। इसका ऑफिशियल नाम है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करेगी उस दिन से इफेक्टिव होगा। अलग प्रोविजंस अलग डेट्स पे भी लागू हो सकते हैं। ये हर उस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। की डेफिनेशंस पहले समझ लो कौन कौन है। इस कोड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन की गई हैं। एम्प्लॉई मतलब कोई भी पर्सन जो वेजेस पे काम करता है, लेकिन अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंडर अप्रेंटिस इसमें नहीं आता। एम्प्लॉयर वो है जो एक या ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और डिसीज्ड एम्प्लॉयर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं। एग्रीगेटर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बायर्स या यूजर्स को सेलर्स या सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है, जैसे कैब एप्स या डिलीवरी एप्स। गिग वर्कर वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर काम करके कमाते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर वो है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर्विसेज देते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मतलब होम बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वेज पे काम करने वाले लोग। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट इस कोड के अंडर आता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली या प्रिस्क्राइब तरीके से एक फिक्स टाइम में रजिस्टर करना होगा। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट पहले से किसी और लेबर लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली इस कोड के अंडर भी रजिस्टर्ड माना जाएगा। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कौन देखेगा सब? इस कोड ने कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो ईपीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम्स चलाता है। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देता है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो अनऑर्गेनाइज्ड, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे फोकस करता है। स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड जो स्टेट लेवल पे वेलफेयर स्कीम्स हैंडल करते हैं। और बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बेनिफिट्स देते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी EPF ये उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगता है जहां 20 या ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इसमें 3 स्कीम्स हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, पेंशन स्कीम जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर 10% वेजेस का देता है। कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स में ये 12% है। एम्प्लॉय भी उतना ही देता है जितना एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी ESI ये उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे अप्लाई होता है जहां 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज है। अगर काम हजार्डस है तो एक एम्प्लॉय होने पे भी ये लगता है। इसमें सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंस बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स और फ्यूनरल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ग्रेजुइटी लंबी सर्विस का रिवॉर्ड ये भी उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगता है जहां 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। अगर आपने एक एम्प्लॉयर के साथ कंटिन्यूसली 5 साल काम किया है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर डेथ या डिसेबलमेंट हो जाए तो 5 साल का रूल अप्लाई नहीं होता। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस पे भी ग्रेजुइटी मिलती है। पेमेंट होती है 15 दिन की वेजेस हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, एक मैक्सिमम लिमिट के अंदर। मैटरनिटी बेनिफिट्स वर्किंग मॉम्स के लिए ये उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगता है जहां 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज है। वुमेन एम्प्लॉइज को 26 वीक्स की पेड लीव मिलती है। जिनके पहले से 2 या ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए ये 12 वीक्स है। मिस कैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन या प्रेगनेंसी से रिलेटेड इलनेस में भी लीव मिलती है। साथ ही नर्सिंग ब्रेक्स और क्रैश फैसिलिटीज भी मैंडेटरी है। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन जो एम्प्लॉइज ESIC के अंडर कवर नहीं है उनके लिए ये प्रोविजन है। अगर डेथ हो जाए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो या टेम्पररी डिसेबलमेंट हो, हर केस में कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये कॉम्पनसेशन वेजेस और एज फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस। कंस्ट्रक्शन पे 1 to 2% सेस लगता है टोटल कॉस्ट पे, लैंड कॉस्ट छोड़ के। इससे मिलने वाले बेनिफिट्स में डेथ और डिसेबलमेंट कॉम्पनसेशन, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स शामिल हैं। 18 to 60 इयर्स के वर्कर्स जो पिछले साल में कम से कम 90 डेज कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हों वो रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हैं।
अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइफ और डिसेबलमेंट कवर, हेल्थ बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन और एजुकेशन जैसे स्कीम्स चलाएगी। स्टेट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग, स्किल अपग्रेडेशन और फ्यूनरल असिस्टेंस जैसे स्कीम्स देगी। फंडिंग के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, बेनिफिशियरीज और एग्रीगेटर्स सब कंट्रीब्यूट करेंगे। एग्रीगेटर्स अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% देंगे, लेकिन ये वर्कर्स को की गई टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा नहीं होगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। सभी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और हर साल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से ऑडिट होगा। एनुअल बजट्स और रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे। कंप्लायंस कौन देखेगा? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को गाइड करेंगे और कंप्लायंस इंश्योर करेंगे। एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज, वेजेस, कॉन्ट्रीब्यूशंस सबका रिकॉर्ड रखना होगा। अगर कोई ड्यूज अनपेड है, चाहे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, सेस हो या पेनल्टीज हो, तो प्रॉपर्टी अटैच करके, सेल करके या लीगल तरीके से रिकवरी हो सकती है। ऑफेंसेस और पेनल्टीज, रूल्स तोड़ोगे तो भरोगे। नॉन कंप्लायंस पे फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। अगर बार बार ऑफेंस करो तो पनिशमेंट बढ़ जाता है। फर्स्ट टाइम वायलेटर्स के लिए कुछ ऑफेंसेस कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी पेनल्टी देकर मैटर सेटल हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, एम्प्लॉयर्स को वैकेंसीज करियर सेंटर्स को रिपोर्ट करनी पड़ सकती हैं। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सर्विस और शॉर्ट टर्म जॉब्स जैसे कुछ कैटेगरीज को इसमें एग्जेम्पशन मिलती है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया है अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। आधार रजिस्ट्रेशन और बेनिफिट्स लेने के लिए मैंडेटरी है। जो एस्टैब्लिशमेंट्स अपने एम्प्लॉयज को कोड से बेटर बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनको कुछ प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिल सकती है। गवर्नमेंट्स अपने पावर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को डेलीगेट भी कर सकती हैं। 9 पुराने लॉज अब खत्म। ये कोड 9 पुराने लेबर लॉज की जगह लेता है। द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, Employment Exchanges Act 1959, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Act 1972, Cine Workers Welfare Fund Act 1981, Building and Construction Workers Welfare Cess Act 1996 और Unorganized Workers Social Security Act 2008। समरी में समझे तो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक यूनिफाइड लॉ है जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, गिग हो या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे सोशल सिक्योरिटी देता है। EPF, ESI, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, कॉम्पनसेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वेलफेयर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की स्कीम्स सब एक कोड में है। गोल सिंपल है, हर काम करने वाले इंसान को सिक्योरिटी और डिग्निटी मिले। अपने राइट्स जानो, अवेयर रहो, सिक्योर रहो। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं। ये है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसका मकसद है भारत के हर एक काम करने वाले इंसान के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना। ये देखिए, ये कोई आम सरकारी दस्तावेज नहीं है। 29 सितंबर 2020 को जब ये भारत के राजपत्र में छपा तो इसने देश के करोड़ों कामगारों के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर दी। अब तक भारत में सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम कैसा था? समझिए कि कानूनों और नियमों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। अलग अलग सेक्टर के कामगारों के लिए अलग अलग नियम। ये सिस्टम ना सिर्फ पेचीदा था बल्कि बहुत बिखरा हुआ भी था। तो सोचा ये गया कि क्यों ना इस पूरी उलझन को हटाकर एक सीधा, सरल और सबके लिए एक जैसा सुरक्षा कवच बनाया जाए। और बस यही सवाल इस नई संहिता का आधार है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं इसे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस संहिता का असल मकसद क्या है, और वो है एकीकरण और सार्वभौमीकरण। ये जो शब्द हैं ये सीधे कानून से लिए गए हैं और इरादा बिल्कुल साफ है। मकसद सिर्फ पुराने कानूनों को सुधारना नहीं है, बल्कि उन सब को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो हर किसी तक, जी हाँ, हर किसी तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचा सके। और आसान भाषा में कहें तो जहां पहले ढेरों कानून थे, अब उनकी जगह सिर्फ एक संहिता होगी। इसका फायदा यह है कि कोई भी कामगार, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करता हो, इस सुरक्षा के दायरे से बाहर ना रह जाए। अब बात करते हैं इस संहिता के सबसे दिलचस्प पहलू की,
वो ये कि इसका दायरा कितना बड़ा किया गया है और इसमें कौन कौन से नए लोग शामिल हुए हैं। और ये शायद इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है। देखिए, पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। ये वो लोग हैं जो अब तक किसी भी कानूनी परिभाषा में ठीक से फिट ही नहीं होते थे। तो कानून की नजर में ये गिग वर्कर है कौन? ये वो इंसान है जो एक पारंपरिक नौकरी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले रिश्ते से बाहर काम करता है, जैसे कि फ्रीलांसर या कोई स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर। और प्लेटफॉर्म वर्कर ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन एप्स या वेबसाइट्स के जरिए काम ढूंढते हैं और सेवाएं देते हैं, जैसे राइड शेयरिंग ड्राइवर्स हो गए या फूड डिलीवरी पार्टनर्स। ये परिभाषा उन्हें सीधे सीधे कानून के दायरे में ले आती है। और फिर आती है असंगठित श्रमिक की बहुत बड़ी कैटेगरी। इसमें घर से काम करने वाले, अपना खुद का काम करने वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सब शामिल हैं। इससे पता चलता है कि इस संहिता का दायरा कितना विशाल है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाएगा कौन? चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत मजबूत ढांचे की जरूरत पड़ेगी और ये संहिता उसी ढांचे की नींव रखती है। ये जो संगठन है, यही इस नई व्यवस्था की रीढ़ है। इसमें केंद्रीय न्यासी बोर्ड है जो प्रोविडेंट फंड देखेगा, और सबसे जरूरी असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर अलग से बोर्ड बनाए गए हैं ताकि उनकी जरूरतों पर खास ध्यान दिया जा सके। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इस संहिता के तहत असल में फायदे क्या क्या मिलेंगे। देखिए, सामाजिक सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है भविष्य निधि, जो एक तरह से बचत है। दूसरा है पेंशन निधि, जो रिटायरमेंट के बाद आमदनी सुनिश्चित करती है। और तीसरा है बीमा निधि, जो एक जीवन बीमा कवर की तरह काम करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर किसी डिलीवरी पार्टनर को काम के दौरान चोट लग जाए तो अब इस संहिता के तहत उसे विकलांगता लाभ मिल सकता है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ है। मतलब ये कि ये जिंदगी के लगभग हर अहम मोड़ पर एक तरह की सुरक्षा देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं है, ये जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों के दौरान एक मजबूत आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाने के बारे में है। तो कानून तो बन गया है, ढांचा भी तैयार है, लेकिन असली काम, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। चलिए आगे की चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। मतलब ये कानून पूरे देश पर लागू होता है, जो बताता है कि इसे लागू करने का काम कितना बड़ा होने वाला है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना बड़ा काम है। ये सिर्फ एक और कानून नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक नीति पहलों में से एक है। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। कागज पर एक बेहतरीन योजना है, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू होती है कि करोड़ों नए कामगारों तक पहुंचकर उन्हें इस एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच में लाया कैसे जाएगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा। यह नया कानून आपके लिए पीएफ, पेंशन, बीमा और ग्रेचुटी जैसी अहम सुविधाएं सुनिश्चित करता है। साथ ही महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव का लाभ भी देता है। For decades, Indian labor law was engineered for an economy of physical presence, built for assembly lines and fixed locations. Access to a safety net required a worker to be tethered to a specific site, bound by a binary contract. As the industrial economy grew, legislation was added piecemeal. Laws stacked up for specific sites, factories, mines, plantations, and docks, creating a fragmented legal maze. This geographic approach left a widening void as the nature of work evolved. The legal structure had no mechanism to account for the rise of a decentralized digital economy. A statutory framework drafted for blast furnaces and dockyards is structurally incompatible with a market run on smartphones, algorithms, and transient digital contracts. In response, the Indian state enacted the Code on Social Security 2020 as a sweeping solution to modernize the labor market. This legislation is an architectural consolidation. It repeals and absorbs 9 historical labor enactments into a single framework.
The preamble's mandate establishes a clear goal: to extend Social Security to all workers, regardless of their sector. The code systematically dismantles the traditional employer-employee boundary to legally codify the gig economy. Mastering this consolidated statute is now a critical enterprise risk mandate for any corporation operating in the Indian market. This architectural model begins with a familiar foundation. Chapters 3 and 4 preserve the Employees' Provident Fund and state insurance schemes for the organized sector. Section 229 defines an establishment as a physical place where industry, trade, or business is carried out, maintaining legal continuity for traditional workplaces. Similarly, Section 226 retains the traditional definition of an employee: a person formally hired on wages by an establishment to perform skilled, manual, or clerical work. For these conventional structures, strict compliance thresholds based on headcount and wage ceilings dictate coverage, holding employers directly liable for their workforce. The traditional core of labor law remains intact, but it now serves as the inner hub of a much larger statutory wheel. The 2020 Code expands its reach to include the unorganized sector, which historically existed outside the legal safety net. This outer ring represents Chapter 9, engineered specifically to capture unorganized workers, gig workers, and platform workers. Section 235 introduces a precise definition for the gig worker: a person who participates in a work arrangement and earns from activities strictly outside of traditional employer-employee relationships. Section 261 differentiates this from the platform worker, an individual who specifically uses an online platform to access organizations or clients to provide services. By creating these precise statutory definitions, the state closes the corporate loophole of labeling digital labor as independent contractors to avoid legal obligations. To power the vital protections in this outer ring, the Code introduces the legal concept of the aggregator. Section 2.2 defines an aggregator as a digital intermediary or marketplace designed to connect a buyer or user of a service with the seller or service provider. This outlines the mandate of Section 114, directing the central government to frame life, disability, and health schemes for these workers. Chapter 9 stipulates these welfare schemes will be funded by a legally mandated contribution, drawn directly from a percentage of the aggregator's turnover. This requirement transforms tech platforms into statutory financial contributors, a shift that alters the unit economics of the gig economy. Regulating a decentralized digital workforce spread across a billion-person population requires a new method of enforcement. Section 122 details the shift from physical labor inspectors to the inspector-cum-facilitator, utilizing a centralized, web-based inspection scheme. Establishments are assigned unique registration numbers. This allows the state to transition from reactive, manual audits to proactive, algorithmic monitoring. The cornerstone of this digital matrix is Section 142, which makes Aadhaar-based identity verification strictly mandatory. An Aadhaar number is legally required for a worker to register as a beneficiary, seek any medical benefit, or receive any payment out of the newly established funds. Compliance now operates as a real-time, digitally verified matrix, a system where corporate non-compliance is instantly visible to the watchful eye of the state. Looking at the finalized architecture, the structural achievement of the 2020 Code becomes clear. It successfully uncouples the concept of Social Security from the strict confines of a traditional, physical employment contract. Instead, these protections are bound directly to verified digital identities and sustained by aggregated, industry-funded pools. This creates a portable safety net that travels with the worker, covering them whether they are clocking into an assembly line or delivering food on a scooter. This architectural shift establishes a comprehensive legal framework capable of regulating the realities of a modern, algorithm-driven economy. For corporate entities, human resource directors, and legal counsels managing operations in India, the baseline has moved. Corporate methods of compartmentalizing labor risks and using contractor status as a liability shield are now legally obsolete. From massive physical infrastructure projects to asset-light ride-sharing apps, every worker must be accounted for within this unified system. Navigating the intricacies of this code is now the required protocol for operating legally and profitably in one of the world's fastest-growing digital economies.
The Code on Social Security 2020 dictates that if an enterprise profits from a network of labor, it is statutorily required to protect the nodes within it. The Code on Social Security 2020 made simple. Whether you work in a factory, an office, drive a cab through an app, or freelance from home, this law was made for you. The Code on Social Security 2020 is one of India's biggest labor reforms. It merges 9 older laws into one clear framework so that every worker in India can access Social Security benefits. Let's break it down simply. What is this code and where does it apply? Officially called the Code on Social Security 2020, this law was passed by Parliament and applies across all of India, every state, every union territory. The central government decides when its provisions take effect and can do so in phases. It covers a wide range of workplaces and workers as listed in its first schedule. Who does it cover? An employee is anyone working for wages, except apprentices under the Apprentice Act 1961. An employer is anyone hiring one or more people, including contractors and legal heirs of a deceased employer. What makes this code modern is that it recognizes new kinds of workers. An aggregator is a digital platform, like a ride-hailing or delivery app, connecting service providers with customers. A gig worker earns outside a traditional employer-employee setup, like freelancers. A platform worker finds work through online platforms. An unorganized worker includes home-based workers, self-employed individuals, and daily wage earners in the informal sector. Registration made easy. Every covered establishment must register, online or otherwise, within the prescribed time. If your establishment is already registered under any previous labor law, it is automatically registered under this code too. The organizations running the show. The code sets up several key bodies. The Central Board of Trustees of the EPF handles Provident Fund, pension, and insurance schemes. The Employees State Insurance Corporation, or ESIC, manages health and Social Security benefits. The National Social Security Board focuses on unorganized, gig, and platform workers. State unorganized workers boards manage welfare schemes at the state level, and building workers' welfare boards look after construction workers. Employees Provident Fund, EPF. Establishments with 20 or more employees must provide a Provident Fund. 3 schemes operate under this: the Provident Fund scheme, with contributions from both employer and employee, the pension scheme for retirement benefits, and the deposit-linked insurance scheme, offering life insurance cover. The employer contributes 10% of wages, 12% for certain establishments, and the employee matches that amount. Employees State Insurance, ESI. ESI covers establishments with 10 or more employees. For hazardous workplaces, even 1 employee triggers coverage. Benefits include sickness, maternity, disablement, dependent support, medical care, and funeral expenses. Both employer and employee contribute at rates set by the central government. Gratuity. Gratuity applies to establishments with 10 or more employees. An employee generally needs 5 years of continuous service to qualify, but this rule is relaxed in cases of death or disablement. Fixed-term employees become eligible after just 1 year of continuous service. Payment is calculated as 15 days of wages for each completed year of service, up to a government-set maximum. Maternity benefits. Establishments with 10 or more employees must provide maternity benefits. Women get 26 weeks of paid leave, reduced to 12 weeks if they already have 2 or more surviving children. The code also covers leave for miscarriage, medical termination, and pregnancy-related illness, along with nursing breaks and creches. Employees' compensation. This covers employers and employees not under ESI. If a worker suffers injury on the job, compensation is paid for death, permanent total or partial disablement, and temporary disablement. The amount depends on the worker's wages and age.
Construction workers, special protections. A cess of 1 to 2% on the cost of construction, excluding land cost, funds benefits for building workers. These include death and disability cover, pension, maternity benefits, medical expenses, and skill development. Workers aged 18 to 60 who have done construction work for at least 90 days in the past year can register for these benefits. Gig workers, platform workers, and unorganized workers. This is where the code breaks new ground. The central government can create schemes offering life and disability cover, health and maternity benefits, old age protection, and education support. State governments can provide Provident Fund access, housing, skill training, and funeral assistance. Funding comes from the central and state governments, employers, workers themselves, and aggregators. Aggregators must contribute 1 to 2% of annual turnover, capped at 5% of total payments made to their workers. Finance and accounts. Every Social Security organization must maintain proper accounts, audited annually by the Comptroller and Auditor General of India. Annual budgets and reports go to the relevant government authority, ensuring transparency. Ensuring compliance. The government appoints inspector-cum-facilitators who both checks compliance and guide employers. Employers must maintain records of employees, wages, and contributions. Unpaid dues, contributions, cess, or penalties can be recovered through property attachment, asset sale, or other legal means. Penalties for non-compliance. Breaking the rules can lead to fines and imprisonment, with stricter punishment for repeat offenses. First-time violators may settle certain offenses through compounding, paying a penalty without going to court. Employment information. Employers may need to report vacancies to career centers. Jobs in agriculture, domestic service, and short-term roles are exempt from this requirement. Other important points. A Social Security fund is established by central and state governments for unorganized, gig, and platform workers. Aadhaar is mandatory for registration and availing benefits. Establishments already offering superior benefits may be exempted from certain provisions. Governments can delegate powers to Social Security organizations. Out with the old. This code replaces 9 older laws: the Employees Compensation Act, 1923, ESI Act, 1948, EPF Act, 1952, Employment Exchanges Act, 1959, Maternity Benefit Act, 1961, Payment of Gratuity Act, 1972, Cine Workers Welfare Fund Act, 1981, Building Workers Welfare Cess Act, 1996, and Unorganized Workers Social Security Act, 2008. To sum up, the Code on Social Security 2020 is a landmark step toward making Social Security simple, unified, and accessible for every Indian worker, whether in a traditional job, gig work, app-based freelancing, or the unorganized sector. It brings everything under one roof. Know your rights, stay informed, and make sure you and your workplace are covered.